Hello, am I audible to you? Welcome live, guys. Today, I have come live, and today I'll be talking about the important concept and the MCQs and some of the PYQs of communication, which are really, really important for your UGC NET December 2025 exam. So, I request you all to please join the session. I'll give you some few minutes of time to join the session. So, I think my voice is audible and the PPT is visible. So, today I'll be talking about not just the paper two concept of communication, but today I will be talking about some of the important PYQs as well as the MCQs, which are frequently asked in communication, especially the PYQs. So, दिस इज कम्युनिकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक स्कोरिंग टॉपिक है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आई रियली वांट यू ऑल टू स्टे फोकस्ड so I'll just wait for a few more minutes and also I request you to please ask questions because I always appreciate people who ask questions. I'll be more happy and glad if you have any confusion in any of the topics which you really want to be addressed. I'll be happy to take your questions. One second. Please let me know. Second. Yeah, let me know if my voice is audible to you. I hope I am audible. It seems my voice is audible. So let's start the concept and the nature of communication. Important PYQs for UGC NET December 2025 exam, and this is session 5. As I promised that I will keep on coming with this type of session for you for your upcoming exam. I am totally dedicated. One second. Yeah. I'm totally dedicated. मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी जगह पे रहूं बट क्वेश्चंस तो आते रहेंगे पीपीटी आते रहेंगे स्लाइड्स आते रहेंगे और मैं आते रहूंगी आपके लिए और हमेशा जब जब आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ये गाना जरूर सुनिएगा वो लक्ष्य मूवी का जो गाना है ना रोके तुझको आंधिया क्या जमी क्या आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है वैसे अपने अपने मोटिवेशन को हमें खुद ही हाई रखना है अपने मोटिवेशन को बिल्कुल भी लो नहीं रखना है क्योंकि हम कई कई बार इस प्रिपरेशन में खुद से हार जाते हैं फेल अपने आप को एक लूजर फील करते हैं कि यार नहीं हो पा रहा है आई एम नॉट एबल टू डू इट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है कंपटीशन बहुत टफ है कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है और नहीं हो पा रहा है पढ़ाई नहीं हो पाएगी मुझसे समटाइम इट हैपेंस आपकी पढ़ाई से कभी कभी जब लिंक टूट जाती है ना तो हम वापस से अपने आप को उस जोन में लाना डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ मैं पढ़ाई के लिए आई वाज ऑलवेज वेरी डेडिकेटेड मुझे पढ़ना बहुत पसंद था और इसी वजह से मैंने पीएचडी करने का भी एक ये लिया स्टेप लिया कि मुझे पीएचडी कंप्लीट करनी है बट व्हेन आई बिकेम मदर जब मैं मदर बनी उसके बाद मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होने लगी मैं नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हूँ बट वो होने लगा खुद ब खुद ठीक है पर मैं जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही होती थी जितना ज्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो रहा होता था घर की एक्टिविटी और बच्चों को संभालने में
मैं उतनी ज्यादा अपने आप को स्ट्रांगली डेडिकेट करती थी कि मेरा इतना टाइम चला गया इन सारी चीजों में, अब मुझे जो 4 घंटे बचे हैं मुझे उसमें कंसंट्रेट करना है और उसमें चीजें निकालनी है, उसमें पढ़ाई करनी है। तो जो डिस्ट्रैक्शन था ना वो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ बनता चला गया। जब मैं फ्री थी तो फ्री थी, मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम ही टाइम है और मैंने कभी उस टाइम को प्रीशियस नहीं समझा। लेकिन जब मेरे पास टाइम हाथों से रेत की तरह जब निकलने लगा, देन आई रियलाइज्ड कि कितना प्रीशियस टाइम है जो इम्पोर्टेंट है मेरे घर पे होना, और मेरा उनको भी डेडिकेट करना, अपनी फैमिली को भी डेडिकेट करना, अपने बच्चों को डेडिकेट करना स्पेशली, वो इम्पोर्टेंट तो बहुत था। पर इसका एक सब्स्टिट्यूट ये था कि मैं उस टाइम को, अगर वहां जा रहा है और जिसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाना ही जाना है, तो क्यों ना जो टाइम मेरे पास बच रहा है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करूं अपने लिए, ताकि मैं कुछ बेहतर बन सकूं, अपने अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट हो सकूं। तो इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है हमें, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट करना। चलिए, अब आपको मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत मैंने दे दिया है, मोटिवेशनल डोज दे दिया है, और हर दिन मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल डोज भी लेकर आती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्लाइड। सो टुडे आई रियली नीड योर ऑल पार्टिसिपेशन। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो, अच्छा, मेरे पीछे का बैकड्रॉप जो है ना, वो बैकग्राउंड प्लीज जस्ट उसको आप नजरअंदाज कीजिएगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट फैंसी बैकड्रॉप एंड आई एम ट्रैवलिंग, एज आई told you earlier. I do not have that fancy backdrop and I'm not even concentrating on creating that kind of a backdrop. Maybe आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, तो मुझे थोड़ा बेनिफिट मिले, तो मैं कुछ चेंजेस इधर करूँ। फिलहाल तो मैं अपने सिर्फ अपने टॉपिक्स और अपने कंटेंट पर काम कर रही हूँ, उस पर मैं बाद में फोकस करूंगी, तो जस्ट इग्नोर दैट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ ग्रुप अग्रीज एंड कमिट टू अ डिसीजन इट हैज रीच्ड, उसको हम क्या कहेंगे? अ consensus, a census, a solution, or D, an analysis? When a group agrees and commits to a decision it has reached, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब एक ग्रुप जो है वो कमिट करता है, अग्री करता है किसी एक डिसीजन पे, तो दैट डिसीजन इज नॉट सेंसस। सेंसस तो हमें किसको कहते हैं? हम जनगणना को सेंसस कहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। सोल्यूशन कह रहा है कि agrees and commits to a decision. How come it be a solution? यहाँ पर किसी प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ डिसीजन की बात हो रही है। जहाँ पे डिसीजन भी अग्री कर रहे हैं, वो डिसीजन सिर्फ अग्री हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोल्यूशन की बातें हो रही है। एंड कहीं पे भी प्रॉब्लम जैसा कोई वर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं है, सो सोल्यूशन इज डेफिनेटली नॉट fit for this question. Then D, an analysis. What analysis? There is analysis की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. So they are in a group and they agrees and commits to a decision. So people are in a group and they agrees and commits to a decision. So when something like this happens, we say it as a consensus. Okay. So after taking the consensus of people, we have come to this decision. So this is what we generally say. So consensus is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी कवर कराऊंगी। और कंसेंसस क्या है? अ कलेक्टिव अग्रीमेंट ऑफ ग्रुप थ्रू डिस्कशन एंड एक्सेप्टेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर वन, and the question is, the concept of global village was stated by, I think this is really important, and the person who actually propounded this concept, the name is also very important. So Marshall McLuhan, B is Shannon and Weaver, C is Aristotle, and D is Swami Vivekanand. The concept of global village was stated by. So who amongst them, uh, propounded this word, global village? So the right answer for this question is Marshall McLuhan. Okay. And why the Marshall McLuhan is important? I have a slide for you. So Marshall McLuhan is a Canadian, he's a Canadian communication theorist,
and a philosopher and a media scholar as well. So he has so many feather in his cap. So he's definitely a very prominent name in the field of communication. So Marshall McLuhan is widely known and widely regarded as a father of media studies, basically. And the medium is the message. He's the one who coined this word. I mean, who propounded this concept that the medium is the message is Marshall McLuhan again. So Marshall McLuhan के जब भी ये नाम आए तो दो तीन चीजें that you have to always remember. Okay, the first one is that the Marshall McLuhan is a Canadian theorist. Is a Canadian theorist, philosopher, and a media scholar. He's widely known as a father of media studies, and he is famous for this word called, global village. So global village उनका ही एक statement था, global village. क्या है वो मैं समझाती हूँ. He is the one who known for this phrase that the medium is the message. Okay, he is the one who explained the hot media and the cool media. He is the one who came up with very important books in communication. And what are those books? I'll explain you that. So one by one, I'm telling you, explaining you first, the medium is the message. So ग्लोबल विलेज तो उन्होंने क्वाइन किया ही था. सो ही ग्लोबल विलेज कहने का मतलब क्या है? तो ग्लोबल विलेज बेसिकली प्रोटेक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक द रेडियो, television, and later the internet. So he said that these would shrink the world. How these media should shrink the world? These are shrinking the world because these media are basically interconnected with each other. Okay, इसको हम कहते हैं ना communication ecology. So these are interconnected with each other. जैसे कि टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये क्या है सबको. विदेश में भी जो लोग हैं वो भी मेरा ये यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. और मैं भी बैठे बैठे अपने घर पे बैठकर आराम से किसी भी कोने में कोई भी छोटे मोटे ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, यू नो सबके जो भी अभी इंटरनेट पे आ रहा है मैं भी आराम से बैठकर देख सकती हूँ. तो ये क्या हुआ कि वी ऑल हैव बिकम वन. We all have become one with the help of internet, with the help of television, with the help of various. Now we have the web series and all. We started watching the Korean dramas. We started watching the Hollywood movies. We started copying their kind of their style, the kind of a language they use, the accent, the dress up, the food, basically the culture. So through this, with the help of all this electronic media, the entire world, the entire globe has become a village. So village क्या होता है? एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर लोग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो ठीक वैसे ही अ, हमारा पूरा वर्ल्ड एक विलेज है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं अगर देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. So this is what we call the global village. Okay, so that is the meaning basically. I hope this is clear to you. Okay, I just try एक बार कंफर्म करती हूँ दैट मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. नहीं तो मेरे बोलने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा. So the next is that what the question was. The question was about the global village, which I've explained you, and I think I explained very finely so that you'll be able to understand it. Now the next that word that he coined was the medium is the message. अब ये बहुत important word है. उन्होंने कह रहा है कि message is not the message, but the medium is the message. हम अपना message जिस medium से भेजते हैं वही medium एक तरीके का एक message है. अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत ही एक अ, बहुत ही कह सकते हैं डीप और गहरी बात कह गए वो कि मीडियम इज द मैसेज. मीडियम इज द मैसेज कहने का मतलब ये है कि हम जो मीडियम चूज करते हैं अपने मैसेज के लिए, अगर उसकी मीडियम ही सही नहीं हो, अगर मीडियम ही सही नहीं है तो वो मैसेज का कोई मतलब नहीं रहेगा. वो मैसेज का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो हमें
मैसेज को तो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस मैसेज को हम किस मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमने गलत मीडियम चूज किया है तो फिर उस मैसेज का कोई मतलब नहीं होगा। So the purpose of this word, this sentence, that the medium is the message, is that we have to be very selective when it comes to choosing the right medium to communicate with the right audience, right? So he said that television changes how people see and experience events, regardless of what program is on it. So example, अगर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, राइट, एक वर्कशॉप कर रहे हैं, और वो वर्कशॉप हम कर रहे हैं अबाउट enhancing the knowledge of the farmers in the cultivation of crops. Okay, so we have conducted a workshop and we invited all the farmers from different across, country, I mean from India, different locations of India. And then I invited the panelists for that workshop, and during the workshop the panelists are speaking in English language. Now they are speaking in English language, maybe through mic or what, that is the medium, of course. But if they are speaking in that language, ओके, इंग्लिश मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी अलग तरीके से, तो फिर द पर्पस वुड बी नल एंड वर्ड, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, दैट द फार्मर्स विल मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग द लंच आउटसाइड rather than listening to the important concept what the panelists are saying. So कहने का मतलब ये है that we always consider the audience's perception. We never underestimate the power of audience. अगर हमारा ऑडियंस कह रहा है दैट यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर मीडियम फॉर दैट, तो वी हैव टू टेक दैट मीडियम, ठीक है। तो मीडियम अगर इम्पोर्टेंट, अगर हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कौन सा मीडियम यूज करना है, स्कूल बुक्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद लुक्रेटिव कार्टून्स हो सकते हैं, तो दैट इज द राइट मीडियम। ओके, अगर हम उन्हें बड़े बड़े न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस थमा देंगे उस चीज को उनके नॉलेज शेयरिंग के लिए, तो दैट मीडियम विल बी ऑफ नो यूज। सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट मीडियम। सो यही कहने की बात हो रही है, दैट द मीडियम इज द मैसेज। वेरी पावरफुल वर्ड एंड वेरी डीप। ओके, चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, yeah. So one more thing that is very, very important. So this slide, it talks about the other another concept that Marshall McLuhan point, that is the hot and the cool media. So he divided the media into two types. So the one is the hot media and another one is the cool media. So now what is the hot media? The hot media is said as the high definition media, which actually gives a lot of data demands. Your participation is not that needed. I mean, your participation is needed, but not all your senses are not required for that, to take the information from that media. Only one sense is required to take that information. Not all your senses are active during um uh, you know in hot media basically. So example are basically the radio, films, printed books, जहाँ पर आपकी सिर्फ एक सेंस की जरूरत है, वन सेंस की जरूरत है, और बहुत सारे सेंस, आपका आपका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बट पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन, 100% पार्टिसिपेशन इज नॉट नीडेड। जहां पर आपने एक मूव, आप बैठ गए आराम से और आप क्या कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो। अब उस फिल्म देखते देखते आप बीच में सब्जी भी काट रहे हो, आप लोगों से बात भी कर रहे हो, आप फोन पे भी बात कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत घूम के भी आ गए या जो भी है। सो दैट इज कॉल्ड दी, जहां पर आपको, आपका रोल बहुत हाई नहीं है, ठीक है, इट इज अ हाई डेफिनेशन, जहां पर जो रोल उस मीडिया का है वो हाई है, और आपका जो रोल है वो उस मीडिया से कम है। So that is called the hot media basically, and the cool media is that media where your your active requirement is needed just to fill the gaps. Okay, so the demand is basically, your interaction is much needed into that. If you're talking on a phone, your interaction is needed. Your participation is needed 100%. So one person is talking to you, and if you're not responding to that person, so again,
that will be of no use. उस conversation का कोई मतलब नहीं रहेगा. So cool media says that ये low definition media है and your involvement is much more needed into this. So that is called the cool media. So मैंने कहा जैसे कार्टून है, आप कार्टून देख रहे हो, आप मैगजीन पढ़ रहे हो. So if you're reading that kind of a media where your interaction is much needed. Next is हाँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, हॉट मीडिया engages one sense completely and it spoon feeds your content. Okay. अब मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है मार्शल मैकलुहान का? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ पेपर 2 के लिए बल्कि पेपर 1 के लिए भी. सो द मेजर वर्क दैट he has done, one of, I think, three of them are I've mentioned here. The extension of man in the year 1964, that is one. Another one is the Gutenberg Galaxy, the making of typographic man, 1962. And the third one is the Mechanical Bride, 1951. So these are the three important major contributions done by Marshall McLuhan, sir. I hope I need to tell him, I mean, need to address him as sir because he's the one who actually worked so much for us. इन्होंने इतने सारे major contributions किए हैं journalism, I mean, media में, media के theories और writing so many uh, important books in media and communication that we really need to respect those person क्योंकि उनकी वजह से ही we are able to know so many things about the media, the major theories, the major models. They are the one who actually worked so hard. उस टाइम ना चैट जीपीटी था, ना इंटरनेट था, ना वैसा कोई बहुत बड़ा मीडियम. They are the one who actually work from the ground. Okay, and they are the path breaker, they are the torch bearers for us, you can say that. चलो, next question. The next question is, one second. If it is assumed that communication has no beginning or end, it is termed as mediation, process, interaction, or transaction. Anyone who is live, they can answer this question. I'll be happy that if someone please come live and answer this question. Okay. Now, if it is assumed that communication has no beginning or end, it is termed as mediation, process, interaction, and transaction. It's very easy to answer. This question is something मैं कह सकती हूँ, it's uh, just by reading this question you could answer this. It is always a process. जब किसी चीज का एक beginning और एक end नहीं होता है तो हम उसको process कहते हैं. It goes on and on and on. So it is kind of a continuous process. And it is, if it is a process, then it will be definitely in a circular way. It will end and then again it will start from that end. Okay, so this is how the process works basically. Next question. Next question is, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. वो वाली फीलिंग आने लगती है जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन या अमिताभ बच्चन सर. चलिए. Communication is derived from the Latin word communis. Again, very, I think these questions I have taken because I think some of these questions are important for your paper 1 as well. Because as I mentioned uh, in the thumbnail also, that not just for the paper 2, but this is for the paper 1 series in communication. So paper 1 में paper 2 से बहुत ही जो questions होते हैं वो बहुत straight forward से question होते हैं जो you can easily answer even if you have read little. तो ऐसे questions को मैंने यहाँ पर लिया है. So communication is derived from the Latin word communis, which means community, common, communion या commitment. Now, even if you don't know the answer, you can just work elimination process की तरह से भी. commitment जैसी कोई word यहाँ पर communication से तो हो नहीं सकती कि हमने communication किया तो हमने commitment कर दिया, एक बार commitment कर दिया तो मैं दूसरों की भी नहीं सुनता. Commitment is, just eliminate this. Communion is again no. Community is again no. Community से communication नहीं आ सकता. ठीक है. कम्युनिकेशन और कम्युनिस्ट जो वर्ड आया है वो बेसिकली वर्ड आया है कहाँ से? कॉमन से. ओके, इट हैज कम फ्रॉम दैट वर्ड कॉमन. अब कॉमन का मतलब क्या हुआ? व्हाई कॉमन? बिकॉज कॉमन
कभी भी कोई दो चीज लोगों के बीच में जब कोई कॉमननेस होती है, वहां पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कम्युनिकेशन सिर्फ इंसानों के बीच में हो. इफ यू आर अ डॉग लवर, यू कैन कम्युनिकेट विद द डॉग, यू नो. आप इफ यू आर अ पेट लवर, यू कैन कम्युनिकेट विद कैट, डॉग, एनीवन. तो जिसमें भी आपका अगर कंपैशन है, अगर कॉमननेस है, लाइक इफ a mother, when a mother delivers a baby or an infant, तो उस इन्फेंट से दे डोंट नो देयर लैंग्वेज. बच्चे को भी माँ की भाषा नहीं पता, माँ को भी बच्चे की भाषा नहीं पता, उनके पास लैंग्वेज नहीं, बच्चे के पास लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है. वो जस्ट अभी 1 सेकंड पहले इस धरती पे आया, अपनी माँ के गोद में आया, बट फिर भी that infant was able to communicate with the mother with the language of affection, the language of compassion, the language of love. So, but one thing that was mutual between the mother and the infant was the commonness. The commonness was the love, the affection, the compassion, the kind of the mutual feeling. Okay. तो वो जो connection develop होता है, that is called the common. तो again I'm telling you that commonness, it never means that two people or the two human being only they have the commonness. You can have the common ness with the plant. कभी कई बार ऐसे होते हैं लोग जो सुबह सुबह गाना सुनाते हैं प्लांट्स को, और वो प्लांट्स भी जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, और इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है. अगर आप सुबह सुबह गाना गाकर प्लांट्स को पानी देना, एंड प्लांट्स भी बहुत ग्रो होती है, उसके उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी आता है. तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो इंडिविजुअल के बीच या दो किसी भी लोगों के बीच में जहां पे भी कॉमननेस होता है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. वहीं पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द कॉमननेस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. I hope those who are live, I hope this is clear to you. And if yes, then please just give me a thumbs up. And those who are live, please at least share and like my this video. I'm doing a lot of effort for you all. Lot effort. Coming daily with preparing the questions. मैं सब कुछ भूल भाल के अभी फिलहाल आपकी तैयारी में लगी हूँ, and I really deserve one like and at least one share. So if you feel like doing it, I'm not compelling you. If you feel like doing it, then please do it. I'll be happy and more motivated to come and to work more harder for you. Right? Chalo, next question. Which of the following does not represent a type of communication? Which of the following does not represent a type of communication? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांजैक्शनल या मैकेनिकल? Intrapersonal, interpersonal, transactional, and mechanical. Anyone who is live, they can answer this question. Which of the following does not represent a type of communication? Intrapersonal, interpersonal, transactional, or mechanical? So the right answer is mechanical. Okay. And you know why it is mechanical? बाकी सारे types जो हैं, they are a type of a communication. Okay. But mechanical is not a type of communication. So the right answer is mechanical. Again, very obvious question, but again, important for your net JRF exam for paper 1. Now, next question. Who said people know themselves and each other only through communication? Who said people know themselves and each other only through communication? George Herbert Mead, Marshall McLuhan, Dennis Maxwell, or Jürgen Habermas? The right answer is George Herbert Mead. Okay, 1 second. Now I just give you brief slide about this person. This name is also very important. Why? Because he's the one who is connected with this
a kind of a theory which is symbolic interactionism. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं बताऊंगी ये क्या है सिंबॉलिक इंटर। जब मैं कॉन्सेप्ट के बारे में आऊंगी देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज, as you can see in your screen, communication that occurs within an individual is interpersonal, communication, intrapersonal और mass communication। बहुत इजी है, एटलीस्ट इसका आंसर तो आपको आता ही होगा। Communication that occurs within an individual. So there are four types of communication, as you all know. The first is the intrapersonal communication. Intra. Always remember, people get confused in intrapersonal and interpersonal communication. Now there is a huge difference between the two. Now when I'm talking about intrapersonal, intra, that is INTRA, intrapersonal communication, that means that we are communicating with ourselves. Okay, and we are communicating with ourselves, that is the intrapersonal. We are communicating how we are meditating, we are doing prayer, or we are even talking to ourselves, you know, हम अपने दिन में हर बार अपने आप से बातें करते हैं, that is a kind of a intrapersonal communication. And when we are talking to one person, another person, we call it as a interpersonal communication. So in intrapersonal communication, we are the one who is sending the message and we are the one who is receiving the message. So the source and the receiver are us only, nobody else. तो इसको हम इंटरपर्सनल करते हैं, और इंटरपर्सनल इज वन वेयर द सोर्स इज, if it is me, the receiver is the another person, and only one person is involved in the interpersonal communication, in which the feedback is very instant and spontaneous. Okay, if you are giving the message, somebody is receiving it, and the person who is receiving it is immediately give you the feedback. So this way the feedback process is very spontaneous and instant, and interpersonal communication is called as the most effective way of communication, because you're getting the instant feedback, and based on the feedback you're improving yourself and you're coming up in a better way. So that is called the interpersonal communication. I hope this is again clear to you. Now the group communication is where more than, minimum three or more than six people are involved in the group communication. And mass communication, as you all know, that mass communication is basically a kind of a communication where large number of people are involved, and the people are anonymous to each other, like they don't know about each other, they are heterogeneous people. Like in mass there are people who are from, irrespective of their gender, age, or income, or height, whatever the variables are, they are always you know uh, heterogeneous mass are involved in the mass communication process, and the feedback is delayed in mass communication. You are not getting the feedback instantly, but rather the feedback is delayed. So this is how the intrapersonal, maybe there is one word which is we call as a what, there is a word which को कहते हैं transaction, no, not transaction, transpersonal communication. इंट्रापर्सनल वो जहाँ पर हम खुद से बातें करते हैं, वहां पे एक वर्ड है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, वेयर द पर्सन टॉक्स टू स्पिरिट्स एंड घोस्ट एंसेस्टर्स। जो लोग गुजर गए हैं वो उनसे भी बात करते हैं। दिस साउंड स्कैरी, बट ये इनफैक्ट बुक में, केवल जो बुक में भी इट इज मेंशन दैट ट्रांजैक्शनल ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। सो ये मेरी कोई बनी हुई वर्ड नहीं है, दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दैट बुक। So that comes under this intrapersonal communication. Now I think it's clear to you. Now coming to the next question, guys, please start responding to my questions, and the answers you can involve yourself, communicate with me, take this opportunity as uh, as your biggest chance. Like you will be getting the instant answers for your question. So take it, guys, uh, take this opportunity seriously. uh, Come up with the questions, come up with the any kind of a confusion that you have. I'll be answering it live. Okay, चलो next question की तरफ आते हैं। Oh my god, ठीक है, हो गया। Hmm, yeah, one second. Next is, hmm,
During the communication process, the message is converted to a symbolic form, decoding, encoding, deciphering or expanding. क्या है इसका सही जवाब? During the communication process, the message is converted to a symbolic form that is called as a encoding. ओके, तो इनकोडिंग में क्या होता है कि जो मैसेज होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है. आप देखे होंगे वो जो प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, इट स्टार्ट्स विद द हाउ द सेंडर इज encoding the message and then coming up with the medium and how it is happening. So encoding is basically a conversion of message into a symbolic form is called as encoding. I hope it is clear to you. Now coming to the next question. See, encoding is the process of converting thoughts, ideas, or information into a communicable form, usually through words, gestures, images, sounds, or symbols, so that it can be sent to a receiver. ओके, किसी भी चीज को उस वे में कन्वर्ट करना. आपके कोई भी इमोशंस हैं, कोई भी जेस्चर है, आइडियाज है, इंफॉर्मेशन है, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इन वर्ड्स और जेस्चर or images, that is called as the encoding of message. Okay, like you are having a kind of a, you are writing something on your WhatsApp, so that your message is converted into words or a text, and that conversion of your message, the conversion of your idea, of the conversion of your thought is been converted into text or giving it a symbolic form. Okay, and then that message is, that text has been again sent with the help of any medium like a WhatsApp or any medium that is basically is adopted by you. So your, when your conversion of your thought and process into a text or in a symbolic form is called as encoding. That is just as simple as that. Next, for which of the following words the term chronomics is used for the interpretation? It is what is it? Is it smell, taste, time, or touch? कई बार पूछा गया है ये, और मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस करना चाहिए, इस क्वेश्चन को लेना चाहिए. तो which of the following words the term chronomics is used for the interaction? The correct answer is time. Okay, अब इसका थोड़ा मैं आपको और एक स्लाइड के थ्रू समझा देती हूँ. तो अ, इसके जो बाकी ऑप्शन है, प्रोक्सिमिक्स, हम कहते हैं ना प्रोक्सिमिटी, यानी कि स्पेस की बात होती है. जब हम पर्सनल स्पेस एस्पेक्ट की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, देन वी आर यूजिंग प्रोक्सिमिक्स. जहाँ पे हम रोल ऑफ आई कांटेक्ट की बात करते हैं, देन वी यूज दिस वर्ड ऑक्यूलिसिक्स. Chronomics is the use of time and haptics when it is a study of touching. जब हम किसी को थपथपाते हैं, जब किसी का हौसला अफजाई करने के लिए उसके पीठ को टैपिंग करते हैं, okay, that touch is called as the haptics. I hope this is clear to you. So this is for today's session. Today I don't know why, but questions मैंने थोड़ा ये just level part 1 है. Okay, part 1 of this communication paper 1 का ये communication subject का part 1 है. I'll be coming again with part 2 and part 3. So part 2 is ये थोड़ा easy level का था. part 1, part 2 will be थोड़ा high level का रहेगा, and part 3 will be जो maximum questions पूछे जा सकते हैं communication paper 1 से. So उसका जो maximum टफनेस जो होगा, कितनी कितना भी टफ पूछेगा, लेकिन वो part 3 से ज्यादा टफ नहीं हो सकता. तो उसको मैंने part 3 में रखा है. So this was the part 1 where the questions are not that tough, easy to know, easy to understand, and easy to answer. So the next level will be the part 2 level. So be ready for that. Tomorrow again I'll be coming. I guess this time is the best time. मैं भी थोड़ी इस अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, और मुझे मुझे लगता है कि आपका इंटरेक्शन भी मुझे ज्यादा मिल सकता है इस टाइम पर. So that's all for today's. I hope you like the session. If yes, then please like, share, and subscribe. If you really feel like the content are good, and if you want to really motivate me so that I could come up with this kind of content on a daily basis till your exams are over,
तो तब तक के लिए तो आपको मुझे पूरा मोटिवेशन मिल रहा है। आई थिंक मुझे आपका पूरा पार्टिसिपेशन मिल रहा है। आई एम गेटिंग views from your end. I'm so happy and so glad that you're liking my content. So keep liking it, and please, 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 please try to be more attentive. Like, try to join the session when I'm coming up with the community and I'm informing you all about the timing. I really need your maximum participation because your participation is really needed in the live session. Chalo, bye for today. Tomorrow I'll be live again. ऑल द बेस्ट। एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद आपको